Chapter 7 Triangles. This chapter is all about congruency of triangles. तो पहले देखो what is triangle. Triangle is a figure formed by three intersecting lines. जो फिगर थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है that figure is known as triangle. It has three sides, three angles and three vertex. देखो these are three intersecting lines A, B, B, C, A, C. A, B, B, C and AC are three intersecting lines. The area formed by three intersecting lines is known as triangle. It has three sides AB, BC, AC. It has three sides AB, BC, AC. Three angles, angle A, angle B and angle C. It has three angles, three vertex. Vertex, एक vertex, एक vertex. A triangle has three sides, three angles, three vertex, right? Congruent figures. What are congruent figures? Two figures are said to be congruent if they are of same size and same shape. That means equal in all aspects. Two figures are said to be congruent. दो figure congruent होगा कब? They are of same size and same shape. That means equal in all aspects. देखो दो सर्कल C1, C2. ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल. इसका रेडियस 5 cm, इसका रेडियस भी 5 cm. Now C1 circle will be congruent to C2 circle. ये congruency का symbol है. C1 circle is congruent to C2 circle. They are of same shape. Both are circular in shape. Both are circular in shape. Same size. Both have equal radii. Both have equal radii. Therefore, they are same size, same shape. Both are circular in shape. Both are equal radii. Therefore, same size. Equal in all aspects. मतलब दोनों का देखो रेडियस सेम है, मतलब दोनों का एरिया सेम आएगा, दोनों का डायमीटर भी सेम आएगा, दोनों का सर्कमफरेंस भी सेम आएगा. Therefore, they are equal in all aspects. दो फिगर्स congruent हो जाता है, मतलब they are equal in all aspects, right? This is the symbol of congruency. Two square having same side. Suppose ये एक square ABCD, ये another square EFGH. ये साइड 4 4 4, स्क्वायर का साइड इक्वल होता है, ये सर्कल का साइड भी 4 4 4. तो ABCD स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू EFGH स्क्वायर because they are of same size, same shape. Therefore, they are equal in all aspects. Therefore, they are congruent to each other, right? Then congruency of triangles. Two triangles are said to be congruent if sides and angles of a triangle is equal to the corresponding sides and angles of other triangles. देखो ABC एक triangle, PQR another triangle. These two triangles are said to be congruent if condition क्या है? Sides and angles of this triangle will be equal to the corresponding sides and angles of this triangle. Then ABC triangle will be congruent to PQR triangle. देखो, it means that इसका actual meaning क्या होता है? ABC triangle will completely cover PQR triangle. ABC triangle will completely cover PQR triangle. अगर ये triangle को उठा के यहाँ पे रखोगे, there is no difference between AB and PQ, BC and QR, AC and PR. So from this definition, it is clear that AB equal to PQ, BC equal to QR, AC equal to PR. And साइड के साथ साथ एंगल भी है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q and angle C equal to angle R. Right? Two triangles are said to be congruent if all angles and sides of one triangle will be equal to the corresponding sides and angles of other triangle. ABC triangle congruent to PQR triangle. ABC triangle congruent to PQR triangle. This is the symbol of congruency. Congruency का symbol ऐसे ही लिखा जाता है, right? Congruent triangle में corresponding parts equal होता है, जो भी side angle रहता है वो सब equal हो जाता है. In congruent triangles corresponding parts are equal.
वी राइट इट इन शॉर्ट, शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? बाय CPCT, कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल C, कैपिटल P. CPCT stands for what? CPCT means corresponding parts of congruent triangles. CPCT stands for corresponding parts of congruent triangles. एक एग्जांपल देखो, it is given that ABC triangle congruent to RPQ triangle. Is it true to say that BC equal to QR? False. देखो, ABC triangle, ABC triangle, then RPQ triangle, RPQ triangle, RPQ. देखो यहाँ पे ABC था, ABC ऐसे ही लिखा, RPQ, RPQ ऐसे ही लिखना होगा. अच्छा, तो ABC ट्रायंगल RPQ के साथ इक्वल है. तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो AB will be equal to RP, BC will be equal to PQ, AC will be equal to RQ. Because from the definition we know that side and angles of one triangle will be equal to the corresponding sides and angles of other triangle. तो AB का corresponding part PR, AC का corresponding part QR, BC का corresponding part PQ. तो AB किसके साथ इक्वल होगा? RP, BC PQ, AC QR. हमारा जो गिवन डाटा के हिसाब से हमें ये मिला. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इज इट ट्रू टू से दैट BC इक्वल टू QR? BC इक्वल टू QR. BC किसके साथ इक्वल है? PQ के साथ इक्वल है. QR के साथ AC इक्वल है. BC इज नॉट द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ PQ. BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट PQ है. BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट QR नहीं है. तो जो आंसर पूछा है, इज इट ट्रू टू से दैट BC इक्वल टू QR? नो. आंसर क्या आएगा? नो. व्हाई? आंसर पूछा है व्हाई? बिकॉज वी नो दैट sides and angles of one triangle will be equal to the corresponding sides and angles of other triangle for a congruency. This is the condition for congruency. Therefore, from this definition, answer will be no. Right? और एक एग्जांपल देखो, it is given that ABC triangle congruent to FDE triangle. ABC FDE के साथ congruent है. If AB is equal to 5 cm, angle B is equal to 40 degree and angle E is equal to 80 degree, then find the length of DF and also measure angle E. क्वेश्चन में क्या पूछा है? दो ट्रायंगल दिया है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ABC ट्रायंगल, FDE ट्रायंगल. ABC ट्रायंगल, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज गिवन दैट ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू FDE ट्रायंगल. इफ AB का मेजरमेंट 5 cm, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ DF एंड आल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल E. देखो, ABC ट्रायंगल, ये ABC, देन FDE ट्रायंगल, FDE ट्रायंगल. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट है मतलब डेफिनेशन से हमें क्या क्लियर हुआ है? AB इक्वल टू FD, AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट FD, BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट D, AC का करस्पॉन्डिंग पार्ट FE. एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल F, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल D, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल E. देखो, तो AB FD, AB कितना है? 5 cm, तो FD भी 5 cm. तो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ DF. DF हमें कितना? FD और DF एक ही बात है, तो DF हमें कितना मिला? 5 cm. देन ऑल्सो मेजर ऑफ एंगल E. एंगल A और एंगल F इक्वल है. एंगल A का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल F. अच्छा, B का मेजरमेंट दिया है, A का मेजरमेंट दिया है. एंगल A का मेजरमेंट कितना है? 80 डिग्री. तो एंगल A के साथ F इक्वल है. तो एंगल E का मेजरमेंट पूछा है. ये एंगल देखो, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री. इट मींस ये भी 80 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, बिकॉज इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है. ये 40, ये 40, ये 80, ये 80. पूछा है एंगल E का मेजरमेंट. एंगल A किसके साथ इक्वल है? C के साथ. तो एंगल C इक्वल टू एंगल E. ये 80 40, ये कितना होगा? एंगल C बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. डेफिनेटली 80 40 120, 180 से 120 जाएगा 60 डिग्री. Therefore, angle E will be 60 degree by angle sum property of a triangle. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ये है 80, ये 40. 80 plus 40 plus C is equal to 180 degree. तो angle C is equal to 180 minus 120, 60 degree. तो angle C का corresponding angle E है. यहाँ पे क्वेश्चन में angle E का मेजरमेंट पूछा है, तो angle A is equal to 60 degree, right? Then criteria for congruency of triangles. What are the criteria of congruency of triangles? Criteria means requirement. दो ट्रायंगल में क्या रिक्वायरमेंट है to prove congruency of these two triangles? There are 4 criteria in total to prove the congruency of two triangles. What are the criteria? SAS, ASA, RHS,
SSS. These are the four criteria. SAS means side, angle, side, angle, right angle, hypotenuse, side. These are the four criteria to prove congruency of two triangles, right?